Thank you very much, dear students, for joining me today's session. My name is Hameed Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. And today's session is actually this continuation of the previous lectures, जिसमें हमने Illustrator और Illustrators के मुतालिक different tools को basics along with the layers concept के साथ देखा था. And today we are not actually going to that much explanation just हमने Photoshop में किया था because the tool remains the same. I'm not supposed to tell you that what does this mean T stands for, this T stands for, or what did this pen tool do, and what this block do, and line and pencil and brush. ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं? This is quite obvious. Now, mashallah, you all are graphic designers, are a professional graphic designer. It's been a month we have been doing and different sort of practices we have been doing. So it's better कि now अभी आपको एक जो इसका environment है वो देख के ही आपको understand कर जाना चाहिए. Is it Photoshop or is it Illustrator? And then ये जो tools आपके सामने नजर आ रहे हैं, that is 2017 onward, that's the list. ये tools देखकर भी आपको अंदाजा हो जाता है that what exactly is the topic or what exactly is the software जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. Correct? There is a slight difference between Photoshop and the Illustrator, but that is quite obvious as far as the graphic designer eyes and brain is concerned. So, not supposed to tell you 87 में tools किस तरह थे, 86, 90, 92 and करते 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 where we have reached to this much stage. So let me delete this one and start with our basic tools first. And let's suppose, as you all know, कोई भी tool के साथ there is a slight arrow that's been available means that you can click for more than a second and it will give you the complete explanation कि इसके अंदर और कौन-कौन से tools available हैं. Correct? So कुछ ट्रेनिंग्स प्रीवियस वाली मैं आपको वैसे ही फॉरवर्ड करता रहूँगा so that कि आप उनको go through करें and you can learn a lot new creative things from that also. लेकिन आज का session would be entirely different as compared to the previous one. So let's get started. As you all know, what we can do with the pen tool. So not supposed to tell you कि pen tool से क्या होता है. बिल्कुल वैसे ही Photoshop में, like for example, something like this, and something like this, and let's suppose that's the starting and ending point that's been joined. So click on this selection tool. So area has been selected. Now what you can do is इसके अंदर click करने पे it will give you the option कि आप यहाँ से इसके अंदर fill color of any जो भी आप choose करना चाहें कोई भी fill in color कर सकते हैं, and that's the line color. Let's suppose I'm interested the line should be yellow and the stroke of the line should be, instead of 1 it should be, click on this 4 and let's get 14. So that is how you can very easily do this. Further, it's a uniform line means start and end exactly the same. Lekin you can do is something like this. The starting is smaller, the center part is the more wide one, and the ending part is again smaller one. So something like this, or maybe you can do different sort of experiments based on this. चलें इसी पे ही आज को थोड़ा सा हम create करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है नहीं? So, and the further is something like this, correct? And these are different brushes, these are different tools जो कि आने वाले टाइम में हम कुछ आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन it is just a matter of applying your time and applying on these different options. जितना अप्लाई करते जाएंगे उतना your mind will groom and आपको different ideas मिलते रहेंगे. So let me I just do not want to get into more detail, so you know better कि किस तरीके से पेन टूल से हमने क्या करना है, टेक्स्ट टूल से, that is quite obvious. टेक्स्ट टूल से आपने क्या करना है, that is click करें यहाँ पे and just type in anything. Let's suppose freelancing and something like this. कोई भी इसको टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, and here are again the tools which are already you exactly know. जिस तरह हमने Photoshop में एक कॉर्नर से पकड़ कर इसको बड़ा किया था, then आप यहाँ से इसको इस तरह बड़ा, इस तरह inverse, जो भी shape आप करना चाहें यहाँ से इस तरह, and let's suppose इस तरह नहीं तो something wider, and then from here you can place any sort of color, yellow color, green color or whatever जो भी आप बताना चाहते हैं, and ये fonts and regular and font का size and center align and all those sort of things कुछ हम detail में further दोबारा आएंगे यहाँ पे. So let me delete this one and let's move forward.
And that is the basic shape tool. As you all know, this is a standard thing between every graphic tool. Like जिस तरह फोटोशॉप में आपने डिफरेंट टूल्स देखे थे, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली स्क्वायर, बिल्कुल किसी भी टाइप का स्क्वायर। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज गाइड मी, अगर मैंने इसका प्रोपोर्शनेट वाइज इक्वल रखना है, लाइक हाइट एंड विड्थ, हाउ कैन आई डू दिस? Is there anyone who can just give me the answer for this? Perfect, perfect. Thank you. Great, excellent. I would request everyone should please a shift key. Yes, yes, yes. Shift key. Correct. Everyone should write here in the chat box. Every individual should write here so that कि अगर किसी को नहीं याद तो उसको याद रह जाए. Thank you. अच्छा जी. आई एम वेटिंग, प्लीज आप सेंड करें। एवरीवन जिसने नहीं सेंड किया, प्लीज टाइप इट हेयर कि अगर मैंने किसी भी शेप को पकड़कर उसकी हाइट विड्थ को इक्वल करना है तो आई हैव टू प्रेस शिफ्ट की। शिफ्ट की से ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली हाइट एंड विड्थ वुड बी इक्वल। करेक्ट। So thank you very much. Still there are plenty of students, they are not typing. I would request you to please follow the instructions जिस तरीके से मैं कहता जा रहा हूँ आपको। And again, as you know the basic, that's the fill color and that's the line color. लाइन कलर पे जाएंगे, फिल इन दिस लाइन कलर, यहाँ से जाके इसका 1 पॉइंट के बजाय 12 पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बस जज़ाकल्लाह, जिसने कर दिया उसकी किस्मत और जिसने नहीं किया उसकी अपनी किस्मत। अच्छा जी, that is the basic tool. Now as we have done with the basic shape, let's move to in चीजों के combination से we will move now further. Correct. So without wasting time, let me tell you, that's the simple box we have created. इसके साथ there is a quick selection tool. Quick selection tool क्या करता है? There are 4 different corners of this shape. Let me click on any of the shape. Right now this has been selected, and keep an eye on this. It's a white means blank, blank, and that's been selected. Now with the help of quick selection tool, sorry, direct selection tool, I can move it any level जहाँ पे भी मैं इसको करना चाहूँ. That is something which I can do. Correct. So I just do not want to get more into this. You know absolutely कि क्या क्या इससे बन सकता है. Done. So let me create another shape. Let's suppose इसी में जाके rounded शेप में करता हूं, लेकिन देयर इज अनदर ऑप्शन विद दिस। अगर लेट्स सपोज आप इसको क्विक सिलेक्शन टूल से इसको मूव करना चाहते हैं, इसको या इसको, देयर इज एन एंगल आल्सो एंड दैट विल अलाउ यू टू डू समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। सो लेट्स सपोज मैं जल्दी से इस पे क्लिक करता हूं। आई हैव टू चेंज द बॉर्डर कलर to this and fill color to any of this. Let's suppose that's okay. And let me go to again this and rounded के बजाय now elliptical tool. And as the color code has been already been selected from here, you can see that the fill color and the line color. So by default it will go something like this. Lekin let's suppose if I'm not interested in this, I'll just go and press D, yeah, default, and or click on here, and it will, the selected would go into the default color scheme, which I was never intend. Let me do this, click outside, and then uske baad press D, and now you can create again this thing, and with the help of shift key again, let's suppose this, and now choice is yours. Fill in color, double click करें इसके ऊपर and fill any, let's suppose color, or let me pick this dark one, and the line color, double click on this, and let's suppose I'm interested yellow. We have not used, okay, we have not used yellow one, so let me pick up this one, and from here in the stroke let's go and pick 10. Correct. So that is something very easily you can do. Correct. So this is very simple. इसके अलावा देयर इज अनदर वेरी पॉलीगोनल टूल एंड स्टार टूल। लेट्स सपोज स्टार पे मैं क्लिक करता हूँ एंड दैट इज द स्टार टूल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन एरो की मैं मैनुअली ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट भी इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ। लाइक 5 एंगल स्टार, 6 एंगल, 7, 8, 9, 10, मैं अप एंड डाउन एरो की, डाउन एरो की मीन्स 1 बाय 1 करते हुए कम, एंड अप एरो की से ऐड होते जाएंगे। एंड आई हैव नॉट रिलीज द क्लिक सो फार। क्लिक वहीं का वहीं है, क्लिक मैंने किए हुए, सो दैट मीन्स द कमांड इज स्टिल इंटैक्ट, एंड अप एरो की से मैं 6 और 5, एंड हियर वी गो,
correct? So let's suppose that are the different shapes which we can create with this, and let's suppose हम जल्दी जल्दी no problem. If you can't hear me, Arshad, then the recording is on, no worries. Correct? So that is something which you can very easily create and add on anything inside this. Correct? So let me go to the next, and that is after this is star is the flare tool. लेकिन flare tool के ऊपर we will come at the later stage because ये usually इतना use नहीं होता. Then of course the line option क्या करेगी? Straighter line shift की के साथ, अगर आप shift की के साथ place करेंगे तो it will go straight shift line. Now the line color as it is this color selected, so that is quite obvious that the color should be something like this. Okay, now what you can do is from the center size you can make it small, you can make it big from any side, and then from here what you can do is you can extend the size of this stroke size from here to 100 or anything, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं. Let me undo this so that कि हम by default वापस आ जाएं. And then इसके बाद there's another very important, and that's the arc tool. Let's suppose we we want to develop something like this. That's the circle. We are interested in creating some kind of arc here, and let me rotate. How can you rotate? Very simple. आप बिल्कुल आए center में, and let's rotate this to this. Okay, and let's create another copy. Now the interesting thing starts. How can you make a copy of this? First, इसके ऊपर आए, press the Alt key, and then skip. Sorry, this is the wrong selection. This has to be selected. Now press the Alt key exactly on this and Shift key के साथ exactly. Let's make a copy of this, and let's take another copy of this at the bottom. मैं Shift key इस दफा select नहीं करूँगा so that के automatically it should pick up the center. और Shift key के साथ मैं इसको थोड़ा सा करूँगा बड़ा so that it should come up with something like this. Amazing, correct? So यस एब्सोल्युटली, आर्क की थिकनेस भी बिल्कुल वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे आपने ये किया. लेट्स सपोज आप चाहें दैट्स द स्ट्रोक, क्लिक करें स्ट्रोक के ऊपर. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिनके तो ऊपर मैं भी नहीं जा रहा. आई जस्ट वांट कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें एंड लेट मी पिक 5. हैव अ लुक एट दिस. अमेजिंग. सो Okay, perfect. Thanks. अच्छा जी. So there is interesting tools one by one करके जल्दी जल्दी में we are going so that के without wasting. It seems more interesting than Photoshop. Mariam, absolutely, I'm telling you, इतना मजे का काम इसके ऊपर होता है, इतना इंटरेस्टिंग काम कि just pick anything and move up anything and whatever जो भी आप करना चाहें इसके साथ comparatively. Moreover, if you remember the basic principle of the Photoshop, that's the concept of layers. Here we are not at all concerned with the layers, लेकिन वो layers की option available फिर भी है. Correct? So let me open up this layers and have a look at this. In the layer one, everything is in layer one. For example, मैं इसको pick करता हूँ, I can drag it down, I can do कि मैं इसको rotate करके something like this, इस तरह कर देता हूँ, and maybe जो भी अब मैं करना चाहूँ इसको, this is something which we can we can do it very easily. And further we shift with the help of shift keys. You can select this whole thing. Let's suppose ये दोनों selected, yes selected, and now this has been selected, and that's the control X means I've cut that from here and create a new layer, and control alt edit से जाएं and you will find out different options. Paste in front and simple paste. Control V जहाँ से आपने copy किया था बिल्कुल screen के almost in the center, that will be pasted. But there's another option, that is if you want के एग्जैक्टली जिस जगह से ये कॉपी हुआ एग्जैक्टली वहीं पे पेस्ट हो, सो दैट इज एडिट से जाएं एंड यू विल फाइंड पेस्ट इन प्लेस, दैट इज इनसाइड, एंड कंट्रोल एफ के जरा दैट्स पेस्ट इन फ्रंट. सो दैट मीन्स एग्जैक्टली वहीं पे पेस्ट हो जाएगा. बट एनी वे दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. मतलब इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि आप बनाना शुरू करें, यू विल फाइंड आउट दिस विल बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. करेक्ट. अब आप चाहें तो इसको पिक करें एंड गो टू दिस कलर स्कीम्स एंड जल्दी से जाके असाइंड ये वाली कलर स्कीम है एंड गो टू दिस एडिट एंड हैव अ लुक एट दिस वन. हैव अ लुक एट दिस वन. एक क्लिक के ऊपर क्या से क्या होता जा रहा है, एंड अमेजिंग इंटरेस्टिंग. जो आप बनाना चाहें जिस तरीके से बनाना चाहें
जो let's suppose this one or whatever, जो भी आप करना चाहिए, correct? So that's how you can very easily do it. But we are not at all concerned right now with these kind of things. We are moving ahead जल्दी से, so that कि हम कुछ ना कुछ आज एक नई shape create कर सकें with the help of these tools. अच्छा जी, अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज जो बेसिक शेप्स आप बना लेते हैं उनकी मदद से आप डिफरेंट शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज द रियल वर्क, करेक्ट? सो दैट्स द रियल वर्क. व्हाट आई विल डू इज कि मैं जल्दी से यहाँ से जाके क्रिएट अ न्यू लेयर और इन दोनों लेयर्स को मैं कर देता हूँ ऑफ. सो दैट मीन्स दैट्स द एडवांटेज ऑफ द लेयर्स, करेक्ट? सो what I'll do is that layer number 3 is our target, and let's create something from the basic shapes to, no, this is R. चलें हम basic tools से कुछ चीज़ create करते हैं, something like this, okay? And the inner side should be purely red, and the outline should be no outline. No means none, correct? So that is one. ओके, एंड लेट मी रोटेट दिस. अच्छा, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की आप अगर रोटेट करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक 45 डिग्रीज, फिर 90s, फिर 135 एंड देन 180, एग्जैक्टली इस हिसाब से ये एग्जैक्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा. Now, what can we do? The other thing which we can do is, okay, let's create a copy. चलिए, Control C and Control F means paste in front, exactly इसी के ऊपर दोबारा paste हो जाए. लेकिन now this time what I'll do is with the help of shift key मैं इसको उठा के इस एंगल पे लगाता हूँ. Done. So this is there anyone who can just guess what exactly is the shape we are going to create from here? Any wild guess? ये क्या चीज बनती जा रही है? अगले 2 क्लिक्स के ऊपर ये एक शेप बन चुकी होगी. सो आई जस्ट वांट कि आप लोग बटरफ्लाई, फ्लावर, स्टार, फ्लावर, गुड, एग्जैक्टली. इज देयर एनी आइडिया? एनीवन एल्स? यू आर गेटिंग क्लोजर, लेकिन प्लीज प्लीज जेट, ओके, स्टार, नो, स्टार्स, ओके, जल्दी जल्दी, क्लोव, प्लान, दिस बटरफ्लाई. माय डियर स्टूडेंट्स, सब के सब गलत है, छोड़ दें. यस, छोड़ दें, सब के सब तुक्के बनाने जा रहे हैं. हैव अ लुक एट दिस. लेट मी पिक अप दिस होल थिंग इन वन गो. एरो की से मैंने जस्ट ड्रैग किया एंड लेट मी, नो 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 नो, छोड़ दें, सब के सब छोड़ दें, बिकॉज इंटरेस्टिंग थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. आई एम प्रीटी श्योर बीइंग ग्राफिक डिजाइनर आपको उसके अंदर शेप्स नजर आनी चाहिए जो आपको इस टाइम नजर नहीं आ रही. एंड लेट मी गो टू दिस अनदर कमांड. ये देखिए, ये क्या कमांड थी? मैं इसको ओपन करता हूं. देयर आर 2 पाथ्स, 2 शेप्स, करेक्ट? दिस इज वन शेप, दिस इज अनदर शेप. ओके, सो डायमंड शेप, ओके, और इसके अलावा भी कोई तुक्का लगाना चाहता है तो लगा दे. ओके जी. ओके, here is another one, a dice I think. Okay, good, लगाते रहें, सब के सब अपने अपने आइडियाज लगाएं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ छोड़ दें, छोड़ दें. नो नो नो, होल्ड ऑन, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की. There is another very interesting tool, and that is called a shape builder tool. Shape builder tool क्या करता है? एक शेप में से दूसरी शेप को बहुत इजीली क्रिएट, प्लस या माइनस कर देता है. There are 2 shapes if you remember. This is once kind of oval, this is another oval. ठीक है जी, लें जी, एक और तो कहा आ गया. सब आइडियाज लगा. नो 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 नो, होल्ड ऑन, सबने अपने आइडियाज लगा ले. हैव अ लुक एट दिस. अभी करते करते हम इरेजर टूल, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सपोज टू टेल यू इरेजर क्या करता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आए, ये हम बाद में करेंगे. बट देयर इज अनदर शेप बिल्डर टूल. आप इस पे क्लिक करें एंड हैव अ लुक एट दिस. प्लस इसकी एरो के साथ आ रहा है. अगर मैं आल्ट की प्रेस करूं तो इट इज माइनस. दिस इज 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस. कैन यू प्लीज कंफर्म व्हाट कैन यू सी इन दिस? Wow, amazing. How beautiful. So that is yes, that is something. अब आप अंदाजा लगा लें
कि सच अ ब्यूटीफुल टूल, कितना खूबसूरत, देखिए आपने से किसी को ये आइडिया नहीं था कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, और आप कितनी अमेजिंग, एक क्लिक्स, मैंने देखा ना क्या कहा था आपको, जस्ट ऑन सिंगल क्लिक एक नई ऐसी शेप बन जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेट मी, ओके थैंक यू, जबरदस्त हो गया, गुड नहीं जबरदस्त हो गया, एक्सीलेंट। सो अच्छा जी, अब आपने बेसिकली करना क्या है, लेट सपोज फॉर द एक्सपेरिमेंट, हम जल्दी से एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। दिस इज वन शेप, इसका लेट सपोज कलर इज, जो भी कलर कर दें चलिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू द कलर्स, लेट मी पिक अप स्टार, लेट सपोज दैट्स द स्टार, और स्पेस बार से मैं इसको उठाकर समवेयर यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, सो with the help of, now you have to pick both with the help of shift key, okay, these two. Now let's move to shape builder tool, and इसको माइनस करना है कि इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, click on alt and click here and click here and click here and click here, ओ ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए लेट मी अनडू, कंट्रोल जी 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 एंड जी, एंड हम कुछ और बनाते हैं। चलो हम ये करते हैं कि हम इसमें से ये वाली शेप को जस्ट, सॉरी, आल्ट की से ये माइनस होगा, लेट्स सपोज दिस एंड लेट्स सपोज दिस, हैव अ लुक एट दिस, इट्स अ न्यू शेप ऑल टुगेदर, इसको उठाएं और साइड पे लें। ओके, एंड लेट्स क्रिएट अनदर, कोई भी रैंडमली एक शेप उठाएं, and let's pick that circle shape inside this, and let's suppose मैं again shape builder tool पे जाता हूँ, लेकिन I have to pick all them first, fun, and now shift के साथ, that's the two, these are combined, now two shapes, and as soon as I click on shape builder tool, this will allow you कि अब आप इसमें से क्या माइनस करना चाहते हैं, आर्ट की प्रेस करें, क्लिक हेयर एंड क्लिक हेयर, वाह अमेजिंग, ठीक है जी। सो दैट इज योर चॉइस, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट। अब आप चाहें इसको अलग किसी जगह यूज कर लें, इसको अलग यूज कर लें, लेट मी डिलीट दिस बिकॉज वी वर डूइंग बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, एंड ये भी डिलीट, एंड देयर इज नथिंग, या दैट्स द वन स्मॉल पेन। सो लेट्स गेट बैक टू आवर बेसिक शेप, हमने क्या से क्या बना दिया। Now again, as I told you earlier, the first thing is the direct selection tool. Click on direct selection tool. Now you can change any of the segment. Click here and change it to anything. Click here and change it to anything. Okay, I'm not going to reshape this one, लेकिन मैं एक काम और करता हूँ कि ये जो दो आपके एंगल्स बने हुए हैं, मैं इनको जाके कर्व्स, स्मूथ कर्व्स में कन्वर्ट करूँ। Have a look at this. Let me undo this. First, make a copy of this. Alt की के साथ मैं इसके सेंटर से पिक करूंगा, जिस भी जगह के ऊपर आप लेकर जाना चाहते हैं प्रेस कर दें। इफ यू आर इंटरेस्टेड एग्जैक्टली इन द सेंटर या एग्जैक्टली इन द लेफ्ट और राइट, सो प्रेस द शिफ्ट की, तो इट विल ऑटोमेटिकली मूव एग्जैक्टली आइदर लेफ्ट और राइट, एग्जैक्टली ऊपर या एग्जैक्टली नीचे, जिस भी एंगल के ऊपर, आल्ट और शिफ्ट की के साथ। और मैंने माउस को भी इस टाइम होल्ड किए हुए, माउस जैसे ही रिलीज करूंगा, सो दैट मीन्स आल्ट और शिफ्ट की को भी मैं छोड़ दूंगा। सो नाउ देयर इज अनदर न्यू शेप्स, दैट देयर आर टू शेप्स नाउ दैट हैज बीन कम। अब आप चाहें तो इसका कलर लेट्स सपोज कोई भी यहाँ से ये कर दें, लेट्स क्रिएट अनदर शेप, एंड इसी की बेशक कॉपी बनाएं, इसके ऊपर बनाएं, इसको इन्वर्ट कर दें, इसको रोटेट करें, एंड समथिंग लाइक दिस, जो भी आप करना चाहें। लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, एंड आई मीन जो, आई जस्ट नॉट वांट टेल यू कि क्या आप, आई जस्ट वांट कि आप खुद से अपना थोड़ा सा ब्रेन को यूटिलाइज करें, एंड लेट्स डू इट, करेक्ट। हाँ, इसके अलावा देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि अभी हम कर सकते हैं, एंड दैट इज कि हम, मैं इसको फौरन से कन्वर्ट करता हूँ इनटू मोर 3D रियलिस्टिक काइंड ऑफ शेप। वो कैसे हम कर सकते हैं, देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टूल असाइड दिस, एंड दैट इज दिस वन, मैश टूल। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मैश। मैश मीन्स कि इसकी डिटेल्स अब आपने ऐड करनी है। लेट्स सपोज मैं सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में क्लिक करता हूँ, देयर इज अनदर वन शेप, एंड देन उसके बाद मैं एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, दैट इज वन शेप, और इसके ऑलमोस्ट इक्वल एक शेप इधर कर देता हूँ। नाउ व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन दिस सेंटर पॉइंट
एंड इसका मैं कलर, इस शेप का सेंटर पॉइंट का कलर मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज थोड़ा सा डार्क वन, लाइक समथिंग लाइक दिस. क्लिक हियर, ओके, एंड हैव अ लुक एट दिस वन. करेक्ट. नाउ क्लिक हियर एंड डू द सेम. लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा ये वाला कलर कर देता हूँ. ये देखें, थोड़ा सा डार्कर शेप. एंड लेट्स सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इसको कोई और कलर कर दूँ, सो डबल क्लिक एंड गो फॉर एनी ऑफ दिस कलर, जो भी आप करना चाहें. लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन येलो कलर या ग्रीनिश टाइप कलर. क्लिक ग्रीनिश एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर्स. ब्यूटीफुल. जरा गौर से इसके पास जाएं एंड हैव अ लुक एट दिस कि क्या खूबसूरत चीज बन गई. अमेजिंग. करेक्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, स्काई इज द लिमिट. से जितना आप काम करते जाएं, अभी तो हमने जस्ट दो टूल्स देखे. अभी तो यकीन करें, आई विश कि मेरे पास इस ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स का एक डिप्लोमा कोर्स होता, विच आई रिक्वेस्टेड टू माई इंस्टीट्यूशन कि मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दें, सो दैट कि मैं वेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर से आपसे वो आउटपुट लूँ कि आप अमेजिंग किस्म के काम निकालना शुरू कर दें. एंड इन बिटवीन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर स्टे इन टच, बिकॉज ये नई नई चीज़ें, इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें हम रिगार्डलेस के आप इस सेशन के बाद हैं या पहले हैं, यू कैन इवन कंटिन्यू द सेशंस. हम ये नई से नई चीज़ें, एक से एक बढ़ के अमेजिंग चीज़ बनाते रहेंगे. सो लेट मी गो वन स्टेप मोर अहेड. मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ, देयर इज अनदर टूल. वाओ. ठीक है ना. अब क्योंकि सेलेक्टेड कलर ये था, इसलिए वो ये चीज़ बन गई. नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि नो, दिस इज नॉट द कलर विच आई एम इंटरेस्टेड. आप मैश टूल पे जाएं, दोबारा इस कॉर्नर को पिक करें एंड इस कलर को वापस उसी पे ले जाएं जो जहाँ पे था. लेट सपोज मैं सेंटर को और पार्ट को थोड़ा सा लाइटर रेडिश कर देता हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस. ये लाइटर कलर हो गया एंड आई एम इंटरेस्टेड कि ये जो कलर था, इसको भी पिक करता हूँ और इसको भी बिल्कुल स्ट्रेटन ला के और ये वाला कलर प्रेस करता हूँ, because there are multiple meshes. इसका ये कलर है ना, the detail color is here. यूजुअली हम लोग जब हम लाइक नेचुरल किस्म की कोई चीज़ वेक्टर शेप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइक पोटैटोज, लाइक एप्पल, लाइक ऑरेंज और समथिंग लाइक दिस, वहाँ पे आपको ये नेचुरल जो डेप्थ है, ये आपको डिटेल जरूरत पड़ती है देने की. करेक्ट. सो जब आपको इस तरह की डिटेल देनी पड़े, आप जस्ट दो शेप्स, आप सोचें हमने किया क्या था, वेयर वी वर. लेट्स मूव इनटू दिस बेसिक शेप्स फर्स्ट एंड लेट मी जल्दी से इसको मैं करता हूँ. हमने बेसिक शेप, सॉरी, ये वो बेसिक शेप थी जहां से हमने किया स्टार्ट, एंड दैट्स एज ऑल द लेयर्स ऑफ. सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सर्कल. करेक्ट. लाइक पीच, एग्जैक्टली. कोई भी आप इस तरह की नेचुरल चीज बनाएंगे एंड कीप इन माइंड कि हमने कुछ शेप नहीं किया अभी, तो हमने क्रिएटिविटी का कोई काम भी नहीं किया था. वी जस्ट केम अप विद बेसिक शेप फर्स्ट. करेक्ट. सो बेसिक शेप से हम करते करते वी रीच टू दैट स्टेज. नाउ स्काई इज द लिमिट्स. अब जितना इसके ऊपर बिल्डअप करते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, आई जस्ट वांट, कोई भी आपके माइंड में शेप आ रही है, उस शेप को बनाने की कोशिश करें with the help of these basic tools, basic shapes. कोई भी ऐसी शेप लें एंड लेट्स सपोज विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप जल्दी से इसको क्लिक करें एंड लेट्स ब्रिंग इट समवेयर हियर into the center and things like this. It is just a matter of click. अब आप इसको पिक करें and let's convert this into the mesh tool and जल्दी से जाके एक पॉइंट सेंटर में लगाएं एंड एक पॉइंट इस तरफ और एक पॉइंट ऑलमोस्ट इस तरफ. So अब आपके सामने the whole game started. सिंगल को क्लिक करें and let's go to this and yellow या greenish, जो भी, let's suppose randomly कोई भी कलर पिक किया and have a look at this. आल्ट की के साथ मैं जूम इन करता हूँ और यू विल फाइंड आउट कितना खूबसूरत किस्म की इसकी ये कलर स्कीम और डेप्थ बनना शुरू हो गई. अभी हमने ग्रेडियंट टूल नहीं किया, अभी हमने कोई टूल नहीं किया, अभी बेसिक 2 4 5 6 डिफरेंट टूल्स किए एंड उसके बाद वी आर ऑल सेट फॉर दिस. नाउ with the help of these, my dear students, with the help of these basic tools, you can create जो भी, sky is the limit. जैसे भी आप शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं. लेट सपोज हमने अभी ये एक शेप से ये डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की और उस डिफरेंट शेप्स में से हमने बेसिकली मैश में कन्वर्ट करके उसको थोड़ा थोड़ा 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया. नाउ
आप इसको पिक करें, लेट सपोज दिस वन, एंड दोनों को इकट्ठा, एंड फाइल से जाके सेव दिस एज एन AI फॉर्मेट, मीन्स Adobe Illustrator. एंड Adobe Illustrator के बजाय इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, SVG scalable vector graphics format, and EPS and PDF and AI. These are the different topics जिन पे फॉर्मेट्स जिन पे आप इसको सेव कर सकते हैं. लेकिन फर्दर सेव as save for web devices पे जाएं, and there's an option for the PNG, and that is transparent PNG. Correct? That is something which you can very easily save from here as PNG format. जिस format में भी आप untitled one format धन्यवाद। करेंगे, that will be saved in PNG format. Asan, you want to say something? Please mute yourself. अच्छा जी, सो डन. सो दैट इज इट माय डियर स्टूडेंट्स. ये था, देखें, ये आपका ट्रांसपेरेंट इमेज आपके सामने है. अब आप चाहें तो इसको हाई रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट कर दें, चाहें तो इसको छोटे रेजोल्यूशन के ऊपर एक्सपोर्ट, सॉरी आपको नजर ही नहीं आ रहा था. ओके, आई एम सॉरी, मैं इसमें वो ओपन करने चला गया जो मैंने एक्सपोर्ट किया था. ये आप बहुत इजीली आप किसी भी फॉर्मेट के ऊपर चाहें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. फाइल से जाएं एक्सपोर्ट, एंड ये यहाँ से जाके पीएनजी लेट्स सपोज कोई भी फॉर्मेट, देयर द प्रीवियस क्लासेस के डिफरेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं. आई जस्ट वांट कि मैं इस क्लास का भी सेव करूँ. लेट्स सपोज अनटाइटल्ड पीएनजी, एंड सेव, एंड नो अनटाइटल इज ऑलरेडी देयर, सो लेट मी अनटाइटल्ड से इसको मैं 2 कर देता हूँ, सो दैट के ये जैसे ही आप करेंगे इट विल आस्क यू 72 DPI के ऊपर एक्सपोर्ट करना है, या हाई रेजोल्यूशन 300, या इसके अलावा आप चाहते हैं कि बहुत हाई रेजोल्यूशन 1200, 3600 पैनाफ्लेक्सिस के साइज का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आप वो DPI पिक्सल्स पर इंच आप उसका देंगे एंड एक्सपोर्ट कर देंगे, एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर कपल ऑफ सेकंड्स इट विल बी एक्सपोर्टेड इनटू द PNG, एंड दैट PNG विल बी अवेलेबल हेयर. लेट्स सपोज मैं जल्दी से प्लेस करता हूँ. That is the PNG format which is there, and let me preview and have a look at this. Sorry, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, so have a look at this one. ये अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करना चाहें तो जूम इन भी करके देख सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो जो भी आप लाइक एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल करना चाहें. अच्छा जी, सो दैट्स इट डियर